गुड इवनिंग, ऑल आर वेलकम। आज फ्राइडे है। फ्राइडे अपना डॉक्टर्स का अवेयरनेस सेमिनार रहता है। आज अपने साथ में बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शेख अपने साथ में लीलावती हॉस्पिटल्स के। तो मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर से completed his MBBS from KJ Somaiya Medical College, Mumbai, and pursued DNB Medicine from Maharashtra Medical Foundation, Pune, India. He gained experience at Jagjeevan Ram Western Railway Hospital before specializing in nephrology with DNB from Lilavati Hospital, Mumbai. With over 8 years of experience, clinical experience, Dr. Sheikh is dedicated to patients' care and mentors fellows the nephrology. His interest lies in interventions in clinical nephrology, and he was a guest faculty and host at the Avatar conference. He has published articles in nephrology journals and served as a reviewer of nephrology and urology journal. तो बहुत ही अच्छा आज का अपना टॉपिक है और अवेयरनेस सेमिनार है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ किडनी डिसीज। तो उनके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी और अपना सौभाग्य है कि आज इतने बड़े डॉक्टर अपने चैनल पे आए हैं। तो प्रोग्राम भी अपना यूट्यूब पे लाइव हो गया है और बाकी के जो भी है वो क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि भाई वहाँ से आप अपना माइक ओपन करिए। Hello, good evening. Thank you very much for your kind words. I am Dr. Shaikh, nephrologist from Gujarati Hospital, and to basically give an opportunity to speak. And I will just have a brief overview on kidney diseases and I think it should be more of a discussion rather than I am speaking and everybody is listening. I will welcome any questions which the participants will have. Hopefully that will make it more interesting. Can I start my presentation? Yes sir, please. Yes, okay. I will just share my screen. Hello. हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है आपका? हाँ, okay, yeah. ओके सर। Yeah, okay. So today's topic is early detection of kidney diseases. I will talk little bit in Hindi, little bit in English. Is that okay? Yes sir, no Yeah, problem. sure. Thank you. So, very famous experimenter or very famous scientist which was present, Dr. Homer Smith. What he said was, bones can break, muscles can atrophy, glands can loaf, even brain can go to sleep without any immediate end danger to our survival. But when the kidneys fail to manufacture the proper kind of blood, neither the bone, the muscle, gland, or brain can carry on. Okay, so he is basically a experimenter or a scientist who has given us the idea how, as human beings, we have evolved from a fish and become human beings, and how our body has adapted. So, what is the most important function in the body which has undergone so much of changes in this evolution process? What the body has done? So basically, uh, to come out from environment where we are surrounded with water,
and to come to basically land and try to remain healthy in the worst of the atmospheric conditions in -degree to 40 degrees centigrade. So is a very important role in this. So basically, we have two in the abdomen cavity of filtering blood, and after the function, they produce urine. And when they produce urine, the urine passes to the urinary bladder. Basically, it is like a muscle pouch where the urine gets collected. And once the urine gets collected, if there is a good amount of urine, then you feel the sensation of passing urine, and you basically can hold the urine for some time because of the capacity of the bladder. And after there is a good quantity of urine collected, then you have to go and kidneys present behind in the abdomen with the rib cage, okay, so that it does not get damaged. Now, what is the function of the kidney? All together, but I will go in excretion of waste. Okay, so also foods and our body is performing various functions of making whatever the blood getting filtered in the kidney, some amount of the nutrients can also get filtered, and to acid and base balance as kidneys become weak, they are not able to properly remove acid from the blood, and because acid level keep on increasing, you have various problems. So kidney also helps in maintaining the acid level in the body, maintenance of electrolyte and water balance. So the kidney, apart from removing the waste substances, removes excessive water also. So water removal and electrolyte removal function it is done. Certain hormone secretions. The kidney basically produces hormones to maintain the hemoglobin level or the maintenance of vitamin D level in the body. And these hormones have also various functions which we will take into account. Okay. So main functions, you can see this sewage pipe. This sewage pipe basically removes all the sewage or dirty water from the building or wherever from the factory. So most important function is the removal of toxins from the body. So just imagine if the kidneys are not working, all these dirty toxins will keep on accumulating in the blood, in the body, and ultimately it can give rise to various problems, various symptoms or diseases. Okay, so this is the most important function of the kidney. Since now we are taking food, we are taking whatever we are taking inside, some amount of removed from the body. So only way from which the water can come out is one by sweating, other by by passing urine or by feces or passing motion or by breathing. Breathing also you are losing some amount of water. But most important in this in removing water is by urine. Okay, so kidney plays an important role. If the kidneys are not doing their job, if you are drinking 2 liters 3 liters of water and the kidneys are not working, all the water will start getting accumulated, and because of water accumulation you will have various symptoms like swelling in the body. Okay, so swelling is one of the symptoms of kidney patients,
and we will see later on how the patients presents various symptoms and everything. So this is one of the important functions of the kidney. Then restores various chemicals like sodium, potassium, calcium, phosphorus. These are also important functions of the kidney. Now, sodium balance, potassium balance. Whenever you are taking certain food, like you are taking, say, normal salt. Salt is sodium chloride. Okay, so sodium is going in your body. If the kidneys are not working properly, all the salt will keep on accumulating, and your BP will start shooting up very high, 150, 160, 170. So in kidney patients, if kidneys are not able to maintain sodium, then your BP will start shooting. Potassium is another important element or electrolyte which the blood has. If potassium is not getting removed from the body by the kidney, then potassium level will increase and you will have some heart related problems. Okay. Calcium and phosphorus. Everybody knows that calcium is required for bone health. So if the kidneys are not working properly, then your bones will become weak and you can develop fractures. So that is also an important function. Now, blood, maintaining hemoglobin. Sir, voice is not coming So clear. hemoglobin is basically the red blood cells in erythropoietin. Erythropoietin is a hormone of the body. If the kidney becomes weak, it will not be level will go down. And because hello, Sir, voice can is you hear not me? coming clear. Huh? You can increase the Huh, voice uh, from your laptop, huh? yes, 1 minute. Because people are chat in the. There are so many Huh, chat. Yeah, please. huh, yeah. Can you hear me now? Now it is okay. Yeah. Okay, okay. I will Please. just hold the mic. Yes. Okay. So I was just explaining about the hemoglobin which is present in the blood. Kidney produces basically a hormone which is responsible to maintain hemoglobin level. Okay. Now, as I said earlier, blood pressure control. Important function of the kidney is to maintain the blood pressure, and if the blood pressure level is not maintained properly, it can also cause kidney problem. So one of the important reasons for maintaining kidney diseases is blood pressure, and kidney problems can also cause an increase in blood pressure. So it is, both of them are related to each other. Okay. Healthy bones. So as I said earlier, kidney is responsible to maintain the calcium and phosphorus level in the body, and if the calcium phosphorus level is not maintained properly, then the bones will become weak. Okay. So why is it so important to talk about kidneys? Okay, so there is a graph which on your on my screen which I can show you. So what is the problem with kidney disease nowadays is that the incidence of kidney disease is increasing. Previously, 10 years, 15 years, or 20 years back, you would basically Sir, voice is cutting. not hear about so many kidney patients, but nowadays you are seeing that almost just give me 1 minute, I'll just disconnect the meeting and reconnect. Is it okay? Maybe because of some network issues. Some network, no network issue. You can continue. No problem. uh, Sometimes voice are coming very low and sometimes. I think the internet is Yeah. going down in between. Okay, no problem. You continue. No problem. Huh. Hmm. Okay, sir. Okay. Okay. Huh. Yeah. Yeah. So so almost in overall in the world, almost 850 million people are in the overall worldwide are affected by some kidney problems. Okay, so that is almost 10% of the population
of the world, and 2.6 million people are receiving dialysis or transplantation or some things. And if you see this is happening slowly, the patients on dialysis or transplant are increasing. And the best solution to early detection of kidney disease. Okay, so and now what about India? So now previously we saw about the world. What about India? So various studies was done in India also. Now what we have found out, even in India, overall prevalence of kidney problem is almost 17, 16, 15%. So out of all 100 people, almost 15 people or 17 people must be having some kidney problem. So it is a big number. If you see, India is such a big population, we have almost 1.4 billion of them have kidney issues, then it becomes a very big number. So that is why we have to do something and try to prevent these people from developing any kidney problems or kidney failure. Now, why is it so important to manage this kidney problems? Now, why is it so important to manage these kidney patients? First of all, early treatment makes a difference. Now, if you see this graph, this is basically down the number of years, 0 to 4 years, 7 years, 9 years, 11 years. Okay. And if somebody who is having some kidney problems and the kidney function is going down, slowly going down, okay, if no treatment is done, then it will directly fall down. Okay, if you start the treatment at 4 years time, say from 0 to 4 no treatment was done, and if you start some treatment at 4 years of time, you will be able to prevent, or you will be able to sort of delay the downfall or reduction in kidney function at least by some time. Okay, but if you start early, we will be able to prolong the kidney function and try to avoid the development of kidney failure, at least, and delay any kidney failure for at least 3 4 years. Okay, so that is why it becomes important to early detect the kidney problems. Am I audible now? Everything is okay? Yes, sir. Okay. Huh. Yes, sure. Now, what is the problem? Why there is a delay in diagnosis of kidney patients? Okay, so basically CKD, which is chronic kidney disease, is a asymptomatic condition. You will not have any symptoms till very late stages. Okay, so what happens most of the times, we see patients, they are not aware that they have any kidney problems. Okay, so very late stages, when the kidney fail reports have come and they are showing very high level of creatinine or kidney, late stage of kidney, till that time patient will not have any symptoms, and that is one of the reasons for delay in diagnosis. The asymptomatic stage contributes to a low awareness of kidneys, and because the patient is not having symptoms, and that is why they are not aware of the symptoms. It is a delay in screening of patients at risk of CKD, meaning what happens, patients who are old age, who have diabetes, who have kidney patient, who have hypertension or various other risk factors, if you don't properly screen them, don't try to find out if they have any kidney related issues, because they are not having symptoms, after that there can be denial regarding any kidney problems. Denial meaning the patient is just not willing to accept that, they can have or they can develop any kidney related issues. Then there is a lack of appropriate understanding of their condition. Lot of times these kidney patients, they do not understand that there are symptoms what they are having that can be related to kidney disease. So that is the reason why they basically the diagnosis is delayed. Now, other reasons can be the fear of cost. Sometimes most of the time what happens, because people think that if I develop some kidney problem, then all the treatment will be very costly, so I don't want to do any test and I don't want to basically figure out if I have any problem. So they delay in doing the proper investigation, and that is why, because of cost, they are not trying to do the proper investigation. Then fear of dialysis. Okay, now what happens is more people think that kidney patients meaning dialysis. So every time anyone who develops any kidney related issues, they will not do any investigations, and because of they think that everything will all patients will go on dialysis. That is the reason
and that is why they don't want to take any help. Sometimes distance from treatment center, like if the patient is living far away cause delay, then low socioeconomic condition, if the patient is poor home or a clinic, then that can also cause this delay in diagnosis. Now coming to Sir, voice is not coming again. Voice is not coming. Sir, voice is not coming. what are the risk factors. So chronic kidney disease, like these people or patients who are having these problems, can factors are not modifiable, meaning some things which we can modifiable, like your age, we cannot change our age. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes. But sometimes the voice are breaking. Yeah, I think the maybe the internet is Internet, yeah. fluctuating a little bit. Okay. Yeah. Okay, no problem. Yeah. So certain non-modifiable factors are like age, gender, ethnicity, genetic component, and low birth weight. Okay. And modifiable factors, some things which we can change is like drug toxicity, hypertension, diabetes, high uric acid, high cholesterol, obesity, urinary tract infections, autoimmune disease, or oxidative stress. So these things are what we can control or what we can basically do the treatment for, and these are modifiable factors. I will just go into detail later on also to try to explain what is happening here. Okay. So symptoms of kidney failure. So if somebody has any kidney related issues, what symptoms they generally get is like there are very non-specific symptoms, like they feel sick, they have nausea, like feeling of vomiting, they will feel sleepy or confused, they can feel tired or they don't have any appetite, they don't feel like eating. So these are the symptoms which they have for kidney patients. Other than that, bad breath because of high levels of urea and creatinine, they can have very bad breath or breath of urea smell coming from their mouth. Then itching because of all the urea and creatinine getting deposited in the skin and dryness of skin. They can have a lot of itching happening. Okay. Then leg swelling, basically swelling over the legs, which is called pedal edema. Okay, the patient will have swelling, and if you try to put a finger or press the leg, you will have basically like a dimpling sort of a thing, which is called pitting edema in medical term. Okay, so if both the legs are swollen, then this can be one of the symptoms of kidney patients. Also with leg swelling, sometimes patient can have facial swelling also. Okay, or sometimes patient may notice that they have a low urine output on walking or on lying down, or the very high blood pressure, BP, becoming uncontrolled on medications. So, what are the other early warning symptoms of kidney failure, like weight loss, unexplained low hemoglobin, feeling like nausea or vomiting, or weakness, breathlessness, very high BP, and swelling of feet? So, initially, patient will have some symptoms, but what are the symptoms which suggest that patient is having failure of the kidney, like very high levels of creatinine, and some things where patients may require dialysis or something, like weight loss and nausea, vomiting, and breathlessness are these symptoms. Okay. So again, basically the same thing explained in a simple chart, like headache can develop if they have kidney problem. So how do we basically try to evaluate, or what are the routine tests that we do? One is first we start with some basic tests. So in geriatric population, like everybody who is above 60 years of age, we ask them to do basic screening, so that if at all they have not done any routine test to figure out on a regular basis, then they should do certain routine tests like complete blood count, full renal function with urine routine, a liver function test, fasting and post-lunch sugar with average HbA1c level, thyroid function test, lipid profile, ECG, vitamin D and B12. So these are some routine tests which we advise in elderly population, so that we don't miss out on any illnesses which can develop in this age group. But in kidney disease, so what are the investigation for kidney disease?
disease. But so specifically to kidney problems, most important is measurement of blood pressure. So every patient, we should measure their blood pressure to see if the blood pressure is high, normal, so that blood pressure can one of the early symptoms of kidney disease. Even before you have any problems in the blood or in the urine, the measure BP fluctuation or BP going high can be one of the early symptoms which can develop even before the test becomes abnormal. Then serum creatinine, blood test to determine serum creatinine. Then urine test, basically to see if there is any protein in urine or RBCs or WBCs or pus coming from the urine. Okay. And in certain selected patient, if at all we find certain abnormality in all the above test, we will do sonography to see the kidney size, shape, if they have any kidney stones or if they have any family history of kidney disease. Then we will basically check electrolytes. We will see urine concentration and dilution test and all the other tests. Okay. So in renal function test, what are the tests which come is blood urea nitrogen, serum creatinine, blood sugar, then sodium, potassium, calcium, phosphorus, lipid profile, iron studies, and complete blood count. So when we are focused on kidney disease, we want all these tests to see if we can identify any kidney problem or how to detect any complication related to kidney problem. Okay. In urine, what we see is basically we do a dipstick urine test wherein we see if there is any protein in urine, any red blood cells, any pus in urine, or we can do a 24 hours test to see whether there is any protein or creatinine, what is the protein creatinine ratio, and do the urine sodium sometimes. Imaging tests like X-ray or sonography. Sometimes we can do an X-ray to see if there is any stone or any blocking the kidneys, or sonography to see what is the kidney size, the shape of the kidney. Doppler basically to see if what is the blood circulation of the kidney. Sometimes a CT scan or MRI may be required if we are suspecting any stone or any tumor in the kidney. DTPA renal scan is basically to determine how much is the kidney function is present, how much is the left kidney or the right kidney working. Sometimes we have to differentiate that. And intravenous urography, basically we give a contrast and do the X-rays. So kidney biopsy is also one of the tests to determine any kidney problem. Basically, biopsies, what we do is we remove a small piece of tissue from the kidney and we send it for testing. So with the help of this special needle, with the help of sonography, we see and directly take a very small hair like piece of kidney, and we stent it for testing, and under direct microscope we can try to identify what is the problem going on in the kidney. Okay. So what can be the causes of kidney failure? Now we saw what can be the symptoms and how we basically try to figure out the kidney problems. Now what can be the causes? Now you must have heard in various newspapers and various articles like India is the diabetes capital of the world. India is the population. There is a very high percentage of patients who have diabetes in India, and diabetes is equally bad if patients have diabetes for more than 10, 15, 20 years. Then they can develop kidney related problems and various other problems. So almost out of 10 kidney patients, almost 6 or 7 will have diabetes. Okay, so diabetes is such a big reason for kidney related issues. So anybody who has diabetes, they should at least every 6 monthly do a urine test to see if there is any urine protein or if the kidney reports or creatinine is normal. Okay. Now other thing is high blood pressure. If you have blood pressure, then it can cause damage to the kidney, and vice versa, meaning kidney damage can also cause a high blood pressure. So high blood pressure can be one of the early symptoms of kidney patients. Okay. Now, glomerulonephritis is basically medical term. This means that kidney has some inflammation. So sometimes the kidney develops some swelling or inflammation or damage to the kidney because of some internal problems like autoimmune diseases, where
our own immunity can cause damage to the kidney. So that basically can cause various problems like loss of proteins or blood from the kidney, and that is glomerulonephritis. Cyst in the kidney, sometimes so certain genetic condition causes various cysts developing in the kidney. If the number of cysts are too many, then it can cause damage to the kidney and kidney failure. Everybody must know that heart there are blockages, so kidney can become blocked for some reason. There are various diseases because of that, and that can slowly cause kidney problems or kidney failure. Chronic pyelonephritis is basically urine infection or kidney infection. Somebody who has got recurrent urine infections or tuberculosis of the kidney can cause kidney damage or kidney failure. Then lupus erythematosus is Break is breaking. Yeah. SLE, systemic lupus erythematosus. This is again an autoimmune. So this can cause kidney. Somebody who have got recurrent. Hello, can you hear me? Sometimes voice are breaking. No problem. Yeah. Okay, okay. So kidney stones. Sometimes if patient is having recurrent episodes of kidney stones, then it can cause kidney-related damage. Then urinary tract infections, as I said, and analgesic nephropathy. Analgesic nephropathy basically means painkillers. Okay, so if somebody is taking painkillers over a long period of time for any reason, then these painkillers for short duration is okay. But if you are taking it for months or years together, then it can slowly cause kidney damage or kidney failure. So we should be very careful to take painkillers, and we should not take painkillers over a long period of time. Now, what is the treatment we have if somebody has got any kidney problem? So first is most important is treat the cause. Okay, first we should see what is the problem, why they have developed kidney damage or kidney disease, and like diabetes or blood pressure, and we should identify that and treat that. So most important would be that. Then is treating the complication, like if they have blood pressure, then give blood pressure medications. If they have water accumulation or swelling in the body, then give medications to remove the swelling. If they have anemia or low hemoglobin, we should to give medicines to correct that, to maintain low cholesterol, and medications to give your bones healthy. And treatment of end stage kidney disease, if somebody develops kidney failure and kidneys are no longer working, then we have various treatment options, like they can undergo dialysis or they can undergo kidney transplant. Now, apart from this medical treatment, we have certain lifestyle changes which are also very important. Like people should stop smoking altogether, because smoking causes various problems, heart problems, blood pressure, and kidney problems. Smoking is strictly should be stopped. Have a healthy diet. I'll just go a little bit in on diet after some time. Okay, what diet one should follow in kidney patients? Restrict your salt intake, okay, to less than 6 grams. So you should restrict salt intake. Do regular exercise at least 3 times or 4 times a week. You should do regular exercise like walking, cycling, or jogging or something like that. Reduce your alcohol intake, okay, to avoid any over the counter NSAIDs or painkillers. So you should not take any excessive painkillers. So these, apart from medicines and treatment, all other lifestyle changes which one should follow. So diet, basically diet is very special. People are lot of time people are confused about what diet we should follow in kidney diseases. So this is not diet which normal person needs to follow. This is if somebody who has kidney problem, then they are advised this diet. Okay, in that sometimes we advise water restriction, fluid restriction, like don't take excessive water. If you have leg swelling or water accumulation in the body, then we advise that we should not take excessive water intake.
as I said earlier, salt restriction. So papad, chutney, achar, all these preservatives, bakery items should be restricted because they have excessive salt. Okay. Then potassium restriction. So fruits and vegetables which are very high in potassium, those should be restricted. Then protein restrictions. So sometimes because the kidney is not able to handle the large amount of protein and you have protein loss from the body, what we are asked them is to do protein restriction. Basically, we take less protein in diet. Okay. Now I just want to give a little brief about what is dialysis, and so that just to make everybody aware of dialysis and transplant. So if somebody develops kidney failure, so it is not that if somebody kidneys are completely failed, there is no hope for such patients. We have something called as dialysis or transplantation. Now dialysis is also, there are two types of dialysis. One is hemodialysis or blood dialysis, and another one is peritoneal dialysis or stomach dialysis. Okay. So in hemodialysis, what happens is that basically there is a machine which will filter the blood, and the toxins and the water from the body will come out by the machine, and the purified blood will again be put back into the body, and the patient will take dialysis in the hospital or in the dialysis department. Okay. Now, another form of dialysis is called peritoneal or stomach dialysis, wherein the stomach or the stomach lining is basically taken like a filter and used as a filter to purify the toxins from the body. So, pure water or dialysis water is put into the stomach. It is kept for 3-4 hours in the body, and after 3-4 hours, it is drained out of the body. And once it has come out of the body, all the toxins and everything come out. Hemodialysis is done in the hospital or in the dialysis clinic. Peritoneal dialysis is done in the house by the patient or the caretaker. Okay, so that is the advantage of hemodialysis and peritoneal dialysis. Now, apart from dialysis, what can happen is transplant. What we can do is kidney transplantation. Okay. So most effective treatment when you compare it with dialysis, so if patient is having kidney failure, we can do kidney transplant also, basically meaning that somebody who is healthy can donate the kidney to the patient, and the patient can survive without any dialysis on basis of the transplanted kidney. Sometimes there are two types of transplant also: live related, like somebody who has a relative who is willing to donate the kidney, or a cadaver transplant. Cadaver transplant meaning sometimes in the hospital we have some patients who are brain dead and their family is willing to donate the organs, and these organs we can use as kidney transplantation. Okay. So transplantation is better than dialysis. We always basically try to encourage patient to go for transplant if at all it is possible, because dialysis take care of only excretory functions, only the toxins and waters are removed from the body, but other hormonal functions are not taken care by the machine. So transplantation will take care of that also. Dialysis you have to do 3 times a week, 4 hours, and removes only 12 to 20% of the toxin. And not all toxins or molecules are removed by dialysis, and it does not. That is why we try to basically encourage patients to go for kidney transplant over dialysis. Now, how to prevent the kidney diseases? Most important is you have to control your diabetes, control blood pressure, control your cholesterol, stop smoking if somebody is doing smoking, and as I said earlier, have a healthy lifestyle. Like you should do regular physical activity and take proper diet which is less in say salt and less in cholesterol. Certain antibiotics can cause kidney damage, so they should also be used as per prescription or as per the doctor's advice. If you have kidney stones, then proper treatment of kidney stones should be taken, and have a healthy diet. Okay. Other than that, most important carry home message is kidney diseases can be prevented and kidney diseases can be controlled.
kidney failure can also be treated. If somebody who's got failure of the kidney and kidneys are completely not doing any function, then we have dialysis and transplantation. And kidney failure is not end of life. Okay, even if kidney fails completely, we can provide dialysis, transplant, and there are various treatment options which are available. So patients should not be scared, and they should always take medical help and try to understand what problem it is. Thank you very much. So that is my presentation. If any questions or any queries or any discussion, I am open. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने अच्छा सबको ये सब करवाया। अभी किसको भी कोई भी क्वेश्चन है तो अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा सर, मुझे ये पूछने का था कि आपने बताया कि भाई कंट्रोल डायबिटीज, फिर कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल लिक्विड प्रोफाइल, तो उसमें क्या रेंज से कंट्रोल करना चाहिए? आप वहां से माइक प्लीज ओपन करिए। एक मिनट, सॉरी, हाँ, बंद हो गया वापस। सर वापस बंद हो गया माइक। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो पहला क्या था कि भाई आपने बताया कि डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए, देन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, और लिक्विड प्रोफाइल कंट्रोल करना चाहिए। तो समझो अभी डायबिटीज है अपने जो, तो कितना करना चाहिए कंट्रोल? सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, हाँ जी, डायबिटीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है हाँ, लेगेसी इफेक्ट। ये हमने अभी लास्ट 50 ईयर्स 70 ईयर्स से जितने भी डायबिटीज़ के स्टडी किए हैं, हाँ, 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 उसमें ये समझ में आया है कि अगर आपने इनिशियल शुरुआत के जो साल है, जैसे कि पहले आपको डायबिटीज़ पता चला कि आपके पास डायबिटीज़ है, और आपने शुरुआत के सालों में डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, जैसे कि आपका शुगर 100 या 120 या 140 या 200 के अंदर रहा, तो जो सालों साल बाद, जैसे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो डायबिटीज़ के वजह से जो तकलीफ़ें होती है, वो सब नहीं होती। ओके, तो लेकिन क्या है, अगर इनिशियली शुरुआत के सालों में अगर आपने डायबिटीज़ को बहुत लाइटली लिया, आपका शुगर 300 400 है, तो वो सेलुलर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो जाती है। तो अगर ऑलरेडी सेलुलर लेवल पे किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में डैमेज हो जाता है, तो बाद के सालों में आप कितना भी उसको डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, आपका एचbA1c कंट्रोल रखें, फिर भी वो जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। मतलब जो प्रोग्रेस है हम स्लो कर सकते हैं, बट उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो डायबिटीज, दैट इज वाई डायबिटीज इज सो डेंजरस। एंड व्हाट हैपेंस के डायबिटीज के पेशेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं होता है शुरुआत के सालों में कि उनका शुगर हाई है। बहुत सारे टाइम पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमको 2 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपका शुगर ज़्यादा है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं थी, तो हमने भी मेडिसिन 2 हफ्ता या 2 महीना लिया और फिर बाद में बंद कर दिया। फिर बाद में हम डॉक्टर के पास नहीं गए या हमने कोई ज़्यादा उसका इलाज नहीं किया, और अभी हमारे शुगर साढ़े 800 है या 550 या ऐसा कुछ आ रहा है। तो और अभी हमको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि पैरों में सूजन आ रहा है, या ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ रहा है ऐसे। तो इट इज़ दैट इज़ वाई ये अवेयरनेस इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप शुरुआत के सालों में डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ताकि वो डैमेज जो डायबिटीज़ हाई शुगर का होता है, वो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ डायबिटीज़। उसके बाद में आता है ब्लड प्रेशर। नाउ ब्लड प्रेशर का भी यही बेसिकली सिनेरियो है, खास करके इंडिया में और भी देशों में, बट इंडिया में खास करके हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से, अगर समझो 100 पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है, तो उसमें से सिर्फ 50 लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीपी हाई है या उनको ब्लड प्रेशर है या किसी ने उनको डायग्नोज किया है। उसमें से भी सिर्फ 35 लोग हैं जो बीपी का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं। मतलब उनको पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। 100 में से सिर्फ 35 में से भी सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर ऑन मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है। सो आप इमेजिन कीजिए कि
एक किसी बंदे को ब्लड प्रेशर है, किसी पेशेंट को, बट उसमें से सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। तो क्या होता है, अगर सालों साल आपका बीपी हाई रहेगा 140 के ऊपर, 160, 170, 180, तो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें चेंजेस हो जाता है। इतना हाई बीपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके वजह से बॉडी अडेप्ट करने लग जाती है। बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो आर्टरीज है वो बहुत हार्ड हो जाती है, थिक कड़क हो जाती है। तो उसके वजह से जो ऑर्गन्स है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और ये चेंजेस के वजह से परमानेंट डैमेज होता है। तो अगर बाद के सालों में भी अगर अगर आपने बीपी को कंट्रोल रखा, लेकिन ऑलरेडी वो ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस हो गया है, इसके वजह से ये सब तकलीफ होती है। सो डायबिटीज और बीपी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई। अच्छा, और सर क्रिएटिन कितना होना चाहिए? तो क्रिएटिनिन बेसिकली कैसा है कि हम किडनी फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं ब्लड में, जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। मैं आपको जस्ट सिंपल इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिएटिनिन बेसिकली क्या है। हमारे जो मसल होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ब्रेक डाउन का एक टॉक्सिन बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, जिसको क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज या क्रिएटिनिन बोलते हैं। ओके। तो जब क्रिएटिनिन लेवल जो मसल ब्रेकडाउन से बनता है, तो ये एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन को किडनी अपने तरीके से निकालती है, जैसे ब्लड में से फिल्टर होता है, यूरिन में से पास होता है। ओके। सो हमारा जो मसल मास है उसमें से एक नॉर्मल लेवल, जैसे बॉडी का हम काम कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई चीज़ें उठा रहे हैं, नॉर्मल अपना रूटीन काम कर रहे हैं, तो बॉडी के जो रूटीन वर्क है उसमें वो क्रिएटिनिन बनता रहता है एवरी डे। ओके, उसके रूटीन वेयर एंड टेयर में। और ये एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस है कि किडनी को वो टॉक्सिन को निकालना है बॉडी में से। अभी क्या होता है, अगर आपका किडनी वीक है तो ये टॉक्सिन लेवल बढ़ते जाएगा, स्लोली 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 बढ़ते जाएगा। ओके। अभी क्रिएटिनिन ऑल्सो हर एक लैब में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। नॉर्मली कोई लैब में 1.2, कोई लैब में 1.4, कभी कभी कोई लैब में 0.9। ये तो बेसिकली 0.9 से लेकर 1.4 तक मोस्ट ऑफ द लैब्स में इसका वैल्यू होता है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिएटिनिन लेवल कब बढ़ता है। अभी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द किडनी अगर डैमेज हो जाती है, उसके बाद जाके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। तो अगर आपने कोई रिपोर्ट देखा और वो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है 1.4, और वो लेवल आया है से 1.5 या 1.7, दैट मीन्स नॉर्मल से आप बोलोगे कि थोड़ा ही तो बड़ा है, मतलब से 0.7 0.1 ही तो बड़ा है ना, तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बॉडी में इतना रिजर्व होता है कि जब तक 50% डैमेज नहीं हो गया है किडनी को, तब तक वो लेवल नॉर्मल से एबनॉर्मल नहीं होता है। सो जब तक वो क्रिएटिनिन लेवल हमको पता चलता है कि एबनॉर्मल है, तब तक 50% ऑफ द डैमेज इज ऑलरेडी डन। बराबर। अभी अपने साथ में एक तो ये जो भाई ये है मलिका बहन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ डॉक्टर साहब, तो ऐसे होता है तो फिर कैसे प्रिकॉशन क्या मालूम पड़ेगा? क्रिएटिनाइन हाफ डैमेज हो जाता है किडनी, बाद में मालूम पड़ता है, तो फिर क्या इंडिकेशन है? हाँ। सो एक्चुअली किडनी बीमारियों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दिक्कत हमको मैनेज करने में यही आती है कि बहुत लेट पता चलता है, बहुत सारे टाइम पे, कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और किडनी डैमेज हो गया। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हमको पता चला कि कोई किडनी या क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम है, तब तक ऑलरेडी उनका काफ़ी लेट स्टेज है, जैसे कि क्रिएटिनिन 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हो गया। और जो सिम्टम्स है किडनी के, जैसे कि वीकनेस या भूख नहीं लगना, या क्या बोलते हैं वेट लॉस, या पैरों में स्वलन स्वेलिंग वगैरह, तो ये सारे सिम्टम्स को बहुत सारे टाइम पे हम लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि शायद कोई और वजह से होगा, या मे बी हमारा एज हो रहा है उस वजह से होगा, या ऐसा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एज जैसे 60 या ये क्रॉस होता है, उसके बाद एक आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, जैसे कि एटलीस्ट वंस ए ईयर या वंस इन 6 मंथ्स आप कुछ बेसिक टेस्ट लाइक आपका ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए, या आपका यूरिन टेस्ट कराते रहिए, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर कंट्रोल में है कि नहीं वो आप चेक करते रहिए। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, फिर भी एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स आपको यूरिन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, जैसे कि क्रिएटिनिन वगैरह चेक करना चाहिए।
तो अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी पता करने का एक ही तरीका है कि आप जो आपकी बीमारी है जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखिए और उसके साथ में आप रेगुलर टेस्ट करते रहिए किडनी फंक्शन के लिए। ठीक लेकिन है। क्रिएटिनिन का कोई सेंस ही नहीं है टेस्टिंग करने का, रीनल फंक्शन टेस्ट का कुछ मीनिंग नहीं है। नहीं, रीनल फंक्शन टेस्ट जब हम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कोई बीमारी की शुरुआत हुई है क्या। अभी एवरी टाइम जब क्रिएटिनिन बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते या हम उसको कम नहीं कर सकते। तो किडनी फंक्शन टेस्ट का करने का बेसिकली सेंस यही बनता है कि हम जल्दी उसको पकड़े और जब तक परमानेंट डैमेज ना हो जाए उसके पहले हम ट्रीटमेंट चालू करके उसको रिवर्स करें। मतलब सिम्टम्स, आप सिम्टम्स को कंसीडर करते होंगे साथ साथ। सिम्टम्स को, यस। जैसे कि अगर किसी को पैरों में सूजन है या भूख नहीं लगता है तो कभी भी जो हाँ, आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हैंग થઈ જાય। और उसको करेक्ट करना होता है पेशेंट को। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आया, हाँ। हाँ, तो जो पेशेंट का वैल्यू है उसके साथ में क्या सिम्टम्स पेशेंट को है वो इम्पोर्टेंट होता है। और कौन सा सॉल्ट खाने का, ऐसी रॉक सॉल्ट खाना अच्छा है कि टाटा सॉल्ट खाना अच्छा है, कौन सा किडनी के लिए? अ, अभी एक्चुअली सॉल्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सिंधा नमक या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट ये सब नॉर्मल सॉल्ट से अलग क्यों है। ओके, नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम होता है और ये सब जो काला नमक या सिंधा नमक होता है उसमें पोटेशियम होता है। ठीक यस। है, तो यस। नॉर्मली हम लोग को सोडियम कम करने के लिए हम बोलते हैं कि हम सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करें। ओके, लेकिन कभी कभी अगर कोई पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो फिर आवाज कट हो गया सर। अगर माइक नजदीक किसी रखिए। को किडनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किडनी, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नॉर्मल सोडियम ब्लैक सॉल्ट वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम या किडनी रिलेटेड इश्यूज है तो फिर ये सब सॉल्ट ऑल्टरनेटिव्स ब्लैक सॉल्ट वगैरह नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल पेशेंट को क्या खाना चाहिए, नॉर्मल पेशेंट को? नॉर्मल पेशेंट को आप नॉर्मल सॉल्ट कम मात्रा में खा सकते हो या ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सिंधा नमक ये सब भी खा सकते हो, डेली उसमें रॉक कोई सॉल्ट खा प्रॉब्लम सकते हैं, डेली रॉक सॉल्ट खा सकते हैं लिमिटेड डेली। लिमिटेड क्वांटिटीज में यस खा सकते ठीक तो है, थैंक यू। अदरवाइज टाटा सॉल्ट खाने का, कौन सा सॉल्ट खाने का रेगुलरली? हेलो। हाँ, ठीक है, नहीं आप कोई भी हो। सॉल्ट खा सकते हो एक 5 लेकिन। ग्राम्स अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है। हाँ, हाँ, ठीक है, वह आपने रेगुलरली, वर्षा में रेगुलरली कौन सा सॉल्ट खाना था? रेगुलरली कौन सा सॉल्ट खा सकते हैं नॉर्मल पर्सन? आपके चॉइस पे है। आप नॉर्मल सॉल्ट भी खा सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी खा सकते हो, बट उसका क्वांटिटी नॉर्मल से थोड़ा कम रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, थैंक ओके। ओके। यू। वर्षा में पूछो था मैं। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट और हर्निया किडनी के उसके लिए है क्या वो, उसके वजह से हो सकता है क्या किडनी प्रॉब्लम? हर्निया एक्चुअली एक अलग प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है बेसिकली जो आंत बोलते हैं हम लोग, वो एक बेसिकली जो एब्डोमेन लाइनिंग है या जो आपका जो मसल्स है वो वीक होने की वजह से आगे की तरफ आके अटक जाता है या आगे की तरफ पुश हो जाता है। तो उसका कुछ किडनी से रिलेशन नहीं है, वो बेसिकली आपका जो मसल वॉल है
वो कमज़ोर हो जाता है, उसके वजह से हर्निया होता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि वो सर्जरी करके वो आंत को वापस से रिस्टोर कर देते हैं और वहाँ पे मसल में वो लोग क्या बोलते हैं, एक मैश बिठाते हैं ताकि वो वापस से ना। तो उसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं है। ओके। अभी प्रोस्टेट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मेल्स में, आदमियों में जो पेशाब का थैली होता है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, हार्मोनल इफेक्ट के वजह से वो प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा होते जाता है, सूजता जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, वो जो ब्लैडर है वो कंप्रेस हो जाता है। वहाँ पे जितना चाहिए उतने अच्छे से तेजी से आप यूरिन पास नहीं कर पाते हो, और उसके वजह से बार बार आपको सेंसेशन आता रहता है कि हमको बार बार यूरिन पास करना है। नॉर्मली प्रोस्टेट के वजह से किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या किडनी फेलियर या किडनी डैमेज नहीं होता है, अनलेस प्रोस्टेट का साइज इतना बढ़ जाए कि आपको बहुत ज्यादा यूरिन, जैसे कि 500 आवाज नहीं आ रही। ml, 800 वॉइस ml या उससे भी ज्यादा यूरिन अंदर जाए कि वो पूरा किडनी, कभी किडनी के ऊपर अफेक्ट होता है, बट नॉर्मली। अच्छा, तो पानी कम पीने को क्यों बोला डॉक्टर ने? आवाज नहीं आ रहा है। ચાર પડતા ભેગા કરતા પેઢીને જમવાનું થઈ જાય, ચાર પડી ગયા। पानी पानी कम पीने को क्यों बोला डॉक्टर ने? नहीं, तो वो किस रीजन से बोला होगा वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको कुछ किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड इश्यूज है? प्रोस्टेट प्रोस्टेट के लिए मेरे मिस्टर को प्रोस्टेट का 2 बार ऑपरेशन हुआ, और अभी 1.5 पौने 2 लीटर ही पानी पीने को बोला है, ऐसा ज्यादा नहीं पीने का। हाँ, तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम में क्या होता है, आप जितना पानी पियोगे उतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। ओके। और अगर समझो प्रोस्टेट का साइज बड़ा है या ग्लैंड का साइज बड़ा है, तो बार बार वो सारा यूरिन आपके पेशाब के थैली में जमा होते रहेगा। तो एक तो ये है कि पेशाब का थैली का जो ब्लॉकेज हो रहा है प्रोस्टेट का, उसका सर्जरी करके आपने ब्लॉकेज निकाल दिया। दूसरा ये है कि अगर आपको रात में ज़्यादा बार बार प्यास लग रहा है या बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो अगर आपने पानी का मात्रा थोड़ा कम कर दिया, तो थोड़ा यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। उससे तकलीफ थोड़े टाइम के लिए आपको कम हो सकती है। इसके लिए उससे डायरेक्टली कुछ किडनी या प्रोस्टेट से रिलेशन नहीं है। अगर आपने 2 लीटर के ऊपर 3 लीटर पानी पीते रहे आप, तो फिर ज़्यादा बार बार आपको ऐसे ही यूरिन पास करना पड़ सकता है, क्योंकि जितना आप इंटेक लोगे उतना बॉडी को तो निकालना है। लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि जितना यूरिन पास होता है उतना किडनी क्लीन होती है, तो वो तो वो अच्छा एक है। एक हाँ, वो एक लेवल तक मतलब उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करोगे, जैसे कि अगर आप पानी भी ज्यादा पीते हो, तो उसका भी आपको डैमेज होगा। जैसे कि अगर आपको बॉडी में से टॉक्सिन निकालना है या किडनी यूरिन पास करना है, तो 1.5-2 लीटर्स तक अगर आपने पानी लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इंडिया में गर्मी है, बॉम्बे में गर्मी है, उसके हिसाब से आपने अगर 1.5-2 लीटर पानी भी लिया, अगर आपको बाकी कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर कोई पेशेंट या कोई आदमी अगर 3 लीटर या उससे ज़्यादा ये सोच के कि मैं जितना यूरिन पास करूंगा उतना क्लियर होता रहेगा, तो किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्लस आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप यूरिन पास करते हो तो इट इज़ नॉट ओनली वाटर, उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाता है। तो आपके बॉडी में ये सब चीज़ की मात्रा भी कम हो सकती है। तो हर एक चीज़ मतलब विद इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब लिमिट में करना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, अभी अपने साथ में भारती बहन वजह नहीं। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो। हाँ। अरे मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मुझे पंपिंग कम कर रहा है ना हार्ट, इसके लिए कम पानी पीने को बोला है डॉक्टर ने। श्योर। तो इसकी वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने 1 लीटर चाय कॉफी जूस सब मिला के 1 लीटर। यस, बट हाँ, अभी आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है राइट नाउ? ना अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ नहीं।
अभी वैसे में तो वे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, और वो अभी रिपोर्ट निकाला, कोलेस्ट्रॉल वो सब, और ब्लड शुगर मुझे नहीं है, डायबिटीज नहीं है। ओके। पर इसकी वजह से मैं बोली तो पानी कम पी रही है, तो उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? सो क्या होता है, अगर किडनी आपका वीक है तो हम लोग पानी कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अच्छा, अगर किडनी वीक है तो आप जितना पानी पियोगे शायद उतना यूरिन पास नहीं कर पाओगे, तो पैरों नहीं में पर सूजन वगैरह हो सकता है। बराबर, सिमिलरली हार्ट का अगर प्रॉब्लम है, अगर हार्ट का पंपिंग वीक है तो कम क्या है, होता है कि किडनी को जितना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल हार्ट का पंपिंग 55-60% होता है, होना चाहिए, उसमें हाँ बराबर में। हाँ, उसमें से ऑलमोस्ट 20% किडनी को जाता है। मतलब अगर जाता आपके हार्ट ने पंप किया तो है, हाँ, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ब्लड किडनी को जाता है। तो जब जाता है, किडनी को ब्लड अच्छे से मिलता है तो किडनी को भी पता है कि हाँ, हाँ, बराबर ब्लड बराबर। एक मिनट, हैंग हो गया है। हाँ, आपका हैंग हो गया है, आवाज नहीं सुनाई देता है। हो आप बोलते हो सुनाई नहीं देता है, रहा है। हैंग हो गया है। हमको और ब्लड बढ़ाने की, या बीपी का हार्ट कमजोर होता है, पंपिंग कम होता है तो हाँ, हेलो, हाँ, अभी आ रहा है हाँ, आवाज? अभी आ रहा है, हाँ, अभी आ रहा है। तो किडनी तो किडनी को भी ब्लड कम मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में किडनी क्या करती है, वो और पानी रिटेन करने को ट्राई करती है। जैसे कि अगर आपने 1 लीटर पानी पिया तो भी हाँ, आपका यूरिन कम होगा, क्योंकि किडनी विल ट्राई टू प्रिजर्व वाटर। उसको लगेगा कि पानी बॉडी में कम है, क्योंकि मुझे हाँ, ब्लड कम मिल रहा है, तो मैं पानी को रिटेन करूं। तो इसके लिए हार्ट के इसके लिए मैं डॉक्टर, फ्रूट्स और खाती है अगर आप पानी वाला, जैसे ग्रेप्स, वाटरमेलन, हाँ, हाँ ये सब तो खा इसके लेती लिए हूँ। अगर आपका हाँ, इसके लिए अगर आपका हार्ट पंपिंग कमज़ोर है और आपने हाँ, ज़्यादा पानी पिया तो और ज़्यादा पानी बॉडी में रिटेन होते जाएगा, और उसके ओके, वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है और हाँ, आपको दम लग सकता है। तो इसके बराबर, लिए वो हम ऐसा बोलते हैं कि आप पानी का लिमिट थोड़ा कम कीजिए। नॉर्मल अगर 2 लीटर है तो आप 1 लीटर तक कीजिए। किडनी हाँ, को कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हाँ, आपका नहीं, वाटर इनटेक और यूरिन आउटपुट दोनों मेंटेन है तो फिर हाँ किडनी अभी को तक कोई तो कुछ भी प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। और तो इसके लिए कम पीती है पानी, इसके हाँ, बंद कर दिया है। पहले तो पीती थी 2 लीटर, 1.5 2 लीटर, पर हाँ, अभी 6 महीने से पंपिंग कम कर रहा है ना, तो हाँ, अभी पानी कम कर दिया। मैं बोली इसकी वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, किडनी अभी में तक तो डायरेक्टली कुछ नहीं, हाँ प्रॉब्लम। आपने समझाया, हाँ, तो बराबर। बाकी वो सब, वो बन क्रिएटिनाइन वो सब रिपोर्ट अभी निकाला, वो नॉर्मल है सब। हाँ, हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी कम नहीं है, नॉर्मल है वो भी। तो हार्ट के मेडिसिन से अगर स्लोली स्लोली आपका हार्ट का पंपिंग अगर इम्प्रूव होता है तो हाँ, स्लोली स्लोली हाँ अभी वो चेंज आपको। करके मेडिसिन दिया है कार्डियोलॉजिस्ट ने, कि हाँ, थोड़ा पंपिंग पंपिंग बढ़ जाए इसके लिए। हाँ, तो अगर हाँ हार्ट का थोड़ा पंपिंग बढ़ता है तो फिर बाद में थोड़ा पंपिंग इम्प्रूव होने के बाद में आपका पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो पानी का प्यास का बहुत वैसा होता है, इस, पानी पियो। मगर ये इसमें ना बोला है ना, तो इसके लिए हाँ, नहीं पी सकती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो इसका इलाज ये है कि आपको वेट चेक करना है। तो नॉर्मली अगर आपके बॉडी में समझो पानी अक्यूमुलेट हो रहा है तो हम्म, कैसे समझ में आएगा, या तो पैर में सूजन आएगा या तो चेहरे पे सूजन आएगा, ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हाँ, कोई सिम्टम्स नहीं है। तो सूजन आना के पहले हमको कैसे पता चलता है, वजन चेक करके। अगर आपका वेट बढ़ता नहीं है, एवरीडे अगर आप चेक करते हो हाँ, वेट हाँ, एक तरीका है, इसका मतलब आपने जितना पानी पिया उतना आपके बॉडी ने निकाल दिया। ओके, तो हाँ है। तो अगर आपने वेट मॉनिटरिंग किया तो आप थोड़ा पानी का इंटेक, जैसे गर्मी में आप बोलते हो कि ज़्यादा प्यास लगता है, तो हाँ थोड़ा अभ्यास। पानी का इंटेक बढ़ा सकते हो, क्योंकि अच्छा, आप बड़ा वेट चेक कर रहे हो। तो वेट चेक अच्छा, करने में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो पानी है, जो यूरिन का क्वांटिटी है वो मेंटेन है। अच्छा मेंटेन। ओके, थैंक यू। बस यही मुझे किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है पानी कम पीने से, ऐसा कुछ देवांगना नहीं बाकी। देवांगना बेन सेठ। थैंक यू। देवांगना बेन हाँ, बोलो। हाँ डॉक्टर, मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, और यूरिन में प्रोटीन जाता है, तो क्या करने का? आपका एज कितना है अभी? अभी 75 है,
और अच्छा, बीपी आपको डायबिटीज सब है मुझे, यूरिक एसिड अच्छा, सब। डायबिटीज कितने साल से है? डायबिटीज 15-20 साल से है। ओके। आपका कुछ आंखों में कभी लेजर या कुछ तकलीफ ऐसे कभी कुछ हुआ है? नहीं, कभी नहीं। आंखों का कैटरेक्ट कभी? का, हाँ, कैटरेक्ट का कैटरेक्ट। हुआ है खाली। लेकिन आंख का पर्दा जो रेटाइना बोलते हैं ना, जैसे आंख का हाँ, पर्दा, वो कभी चेक हुआ है क्या? नहीं, नहीं। तो मतलब नॉर्मल, आई टेस्ट होता है ना, वो कैटरेक्ट किया तभी। हाँ, एवरी टाइम जब हम आई चेकअप करते हैं ना, तो एवरी टाइम वो लोग आंख का पर्दा चेक नहीं करते हैं। हाँ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी कैसा है, कोई भी पेशेंट जिसको 10 साल 15 साल से डायबिटीज़ है, उसको डायबिटीज़ के वजह से थोड़ा किडनी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। ओके। हाँ, अभी ये जो किडनी के ऊपर इफेक्ट हुआ है, यूरिन में जो प्रोटीन है, वो डायबिटीज़ के वजह से है कि और कोई रीजंस के वजह से है, वो हम कैसे पता करेंगे? आंखों में जो आंख का पर्दा होता है, जिसको हम लोग रेटाइना बोलते हैं, उसके हाँ, जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो बहुत ही फाइन होता है। हाँ, ओके। तो हम नॉर्मल आई डॉक्टर के पास जाके उनके मशीन पे चेक करके देख सकते हैं कि आंखों में कुछ डायबिटीज के वजह से या कुछ ब्लड प्रेशर के वजह से कोई चेंजेस या कुछ ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। अगर हमको ऐसे पता चलता है कि आंखों में कुछ डायबिटीज का डैमेज है, तो हम ऐसे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि किडनी के ऊपर भी जो प्रोटीन जा रहा है या क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ के आया है, वो डायबिटीज के वजह से हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल रखना इम्पोर्टेंट है। और अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तो प्रोटीन का क्वांटिटी कितना है वो पता बहुत कम लेती हूँ प्रोटीन का करके क्वांटिटी। उसके हफ्ते में लिए 1-2 बार ही लेती हूँ, दाल वगैरह। कोई वापस आवाज मेडिसिन नहीं आ जिससे रहा है। प्रोटीन क्वांटिटी कम करके उसको कम करने के लिए मेडिसिन चालू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के हाँ, साथ में यूरिन का प्रोटीन और आँख का चेकअप इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हम लोग प्रोटीन कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि आपका किडनी और क्रिएटिनिन जो लेवल है उसको मेंटेन रखें। प्रोटीन ज्यादा कम लेने से और कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं, और कोई तकलीफ नहीं है। मतलब नॉर्मली भी हम किडनी पेशेंट में प्रोटीन को थोड़ा कम लेने के लिए बोलते हैं। जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे चना, छोले, मूंग, मटकी वगैरह, जो दाल क्वांटिटी, उसको हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं। और नॉर्मल से थोड़ा कम लेना है आपको, आपके वेट के हिसाब से। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, जयश्री बेन शाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ, बोलिए। मैंने हमણાં मैंने हिंदुजा में रिपोर्ट किया फुल बॉडी चेकअप, उसमें थोड़ा क्रिएटिन ज्यादा है, 1.30 आया है। तो क्या करने का? मेरे को डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा है। अभी आपको कोई भी मेडिसिन चालू है किसी चीज़ के लिए? हाँ है, कोलेस्ट्रॉल के लिए है, हाइटस हर्निया के लिए है। और कोई चीज़ के लिए कोई मेडिसिन है? नहीं। ओके। तो और ऐसे सिचुएशन में, हाँ, कैल्शियम भी लेती हूँ, कैल्शियम का प्रॉब्लम हो गया था तो। ओके, बट इसके पहले कभी आपने रिपोर्ट चेक किया है किडनी का या क्रिएटिनिन का या ऐसा कुछ? हाँ किया था तो तभी नहीं था। तभी नहीं था। ओके, वो लास्ट कितना टाइम पहले चेक हुआ था? वो 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। ओके। मैंने डेट चेंज तो करा भी। इसमें से अभी क्या हो सकता है कि पहले तो, या तो आपको किडनी का प्रॉब्लम का शुरुआत हो सकता है, या तो कोई और रीजन के वजह से क्रिएटिनिन बढ़ के आया हो सकता है। तो हाँ, इसमें से वो कैसे पता चलेगा? आपको यूरिन टेस्ट देखना होगा। यूरिन में कुछ ब्लड या प्रोटीन या पस या इन्फेक्शन का कुछ डाउट है क्या, वो पता करना पड़ेगा। हाँ, उसके यूरिन में बाद, प्रोटीन जाता है थोड़ा। हाँ, तो यूरिन में प्रोटीन जाना और क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ के आना, ये कुछ किडनी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, जो
नॉर्मल रीजन जो होते हैं एज के साथ में जिसके वजह से किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ता है या प्रोटीन आता है वो नहीं है, तो हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट, टू पता करने के लिए कि क्या रीजन है जिसके वजह से आपका क्रिएटिनिन या प्रोटीन यूरिन में आ रहा है। तो अभी के सिचुएशन में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो नॉर्मली हम लोग 1-2 हफ्ते के बाद में रीचेक करेंगे, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन आपका परसिस्टेंटली जा रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, क्रिएटिनिन का लेवल रीचेक करेंगे। अगर 15 दिन के बाद में आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो वेल एंड गुड, शायद हम कुछ ना करें, महीना 2 महीने में रीचेक करें। लेकिन अगर हर दोनों रिपोर्ट में आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई आता है या यूरिन में प्रोटीन हाई आता है तो हमको फिर आगे उसका दूसरा टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा, वो ये कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, वो आपका फिर कितना प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ में कुछ आरबीसीज है या कोई पस है या कुछ है, वो सब देख के फिर हम लोग डिसाइड करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साई चौकसी। हाँ मारे जी ने डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना पैर में स्वेलिंग आता है और रात को मैं जब सो जाती हूँ तब मैं पिलो लेके सो जाती हूँ ना पैर के नीचे, तो मुझे स्वेलिंग आंख के पास आता है और पैर का स्वेलिंग निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको और कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम? पहले मुझे डायबिटीज था 3 महीने पहले, और ओके। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रिपोर्ट निकाला तो 6.1 आया, यानी प्री डायबिटिक बनता है। कोई मेडिसिन आपको चालू है डायबिटीज के लिए? हाँ हाँ। ओके। और 3 महीने के अलावा आपको डायबिटीज नहीं था? नहीं था मुझे, और बाकी मतलब मुझे इसके ना पहले कभी? ब्लड प्रेशर है और थायराइड है। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन कब से चालू है आपका? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन कब से चालू है? 10 इयर्स पहले से, 10 10 ईयर्स से। 12 पहले से। ओके। और थायराइड का मेडिसिन? 5 इयर्स। 5 ईयर्स से। ये जो टेस्ट हुआ है डायबिटीज का, उसमें आपका कुछ यूरिन का कोई जांच हुआ है जिसमें यूरिन में कुछ प्रोटीन या ब्लड या कुछ ऐसे? हाँ, तो यूरिन में ना प्रोटीन दिखाता है 7.6। यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली ऐसा 1+ या 2+ या ऐसा कुछ लिख के आया होगा। वैसा तो कुछ नहीं, प्रोटीन विद ईजी प्रोटीन टोटल 7.6 लिखा है, नहीं 8.1 है उसमें, एल्ब्यूमिन 4.20। नहीं, ये आप ब्लड का बोल रहे हो जो? रेशो है 1.24। हाँ, ये जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और रेशो है ना, ये ब्लड में आता है। लेकिन यूरिन में, आपके यूरिन के रिपोर्ट में कोई प्रोटीन या पस या आरबीसीज कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो नॉर्मली आप पानी कितना पीते हो? 2 लीटर, 2 लीटर 2.5। ओके। सो सी, पैरों में सूजन और चेहरे पे सूजन जो है वाटर अक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है। ओके। किडनी का अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो हमको लिवर रिपोर्ट और हार्ट का रिपोर्ट और थायराइड का रिपोर्ट चेक करना होगा टू सी अगर उसमें से किडनी के अलावा और कोई चीज़ें हैं जिसके वजह से वाटर अक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर ये सारे चीज़ें भी नॉर्मल आती है तो फिर आप थोड़ा पानी का इंटेक कम करने को ट्राई कीजिए थोड़ा दिन के लिए, जैसे 2 का 1.5 या अराउंड, और उससे आप देखिए कि अगेन आपको कुछ वाटर अक्यूमुलेशन या कुछ हो रहा है क्या। नहीं, मैं पानी कम पीती हूँ ना, तो फिर ये सब नहीं ज्यादा होता है, हाँ, तो आई थिंक वगैरह नहीं पानी आता का है अगर, ज्यादा। हाँ पानी का अगर मैनेज करेंगे तो ये भी शायद सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन ये मुझे करीब 5 से 7 साल से होता है, हाँ अभी से नहीं, मतलब, साल हाँ पहले होता है। कभी कभी बॉडी में थोड़ा वाटर अक्यूमुलेशन ये सब हो सकता है, लेकिन अगर लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन या हार्ट फंक्शन नॉर्मल है तो देन वी आर नॉट वरीड कि भाई मेजर जो ऑर्गन्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर देन नथिंग टू डू। ओके। और थैंक यू। पानी मुझे 2 लीटर ही पीना है कि अगर 1.5 आपको लीटर? सूजन होता है तो आप कम करो, अगर सूजन वगैरह नहीं है, बॉडी इज एबल टू हैंडल, तो आप फिर नॉर्मल ले सकते हैं।
થેન્ક યુ. ठीक है, वेरी अभी मच एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. બોલી નાખો આપણે વર્ષાબેન, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. हाँ सॉरी सॉरी पाची हूँ આવી डॉक्टर ये थायराइड का बोला, इसके लिए मैं वापस आई कि थायराइड से भी हो सकता है क्या किडनी में इफेक्ट? हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, थायराइड फंक्शन तो पूरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है. किसी किसी को अगर थायराइड वीक है या हाइपोथायराइड है और मेडिसिन अगर नहीं लिया तो हाँ, टीएसएच लेवल बढ़ने की वजह से या थायराइड हार्मोन लेवल लो होने की वजह से भी किडनी के ऊपर मतलब कुछ अफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है. जैसे आपने थायराइड का मेडिसिन वगैरह लिया, फंक्शन नॉर्मल हुआ तो वो किडनी रिकवर हो जाती थैंक यू. ચલો થેન્ક યુ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન બોલો. આપણે દીપ્તિબેન વકીલ, हेलो. है. यस. લાસ્ટ हाँ ક્વેશ્ચन. डॉक्टर साहब, मुझे इतना पूछने का है कि हमें स्वेलिंग होती है तो उसके लिए पानी का इंटेक कम करना चाहिए, और दूसरा क्या खाने पीने में परहेज करनी चाहिए जो स्वेलिंग को कम करे? एक्चुअली स्वेलिंग तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि पता करें कि क्या रीज़न से हो रहा है. ओके. हाँ जैसे हाँ. कि स्वेलिंग एवरी टाइम जब सूजन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर अक्यूमुलेशन. ओके. कभी कभी पैरों में स्वेलिंग कुछ और रीज़न से भी हो सकता है. अगर अनइक्वल स्वेलिंग है, मतलब एक पैर में ज़्यादा है एक में कम है, तो कुछ और रीज़न हो सकता है. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्वेलिंग का क्या रीज़न है. किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, कि थायराइड प्रॉब्लम है, या कभी कभी लो प्रोटीन के वजह से भी स्वेलिंग हो सकता है. तो बाकी सब टेस्ट करके इम्पोर्टेंट ये है कि पता करें कि क्या रीज़न है. तो उसके लिए क्या टेस्ट करना जरूरी और होता है कि स्वेलिंग पता चले? रीजन? हाँ, मतलब हेलो. अगर किसी को स्वेलिंग परसिस्टेंट है, मतलब स्वेलिंग में ज़्यादा है, तो फिर लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे टेस्ट करना ज़रूरी है टू फिगर आउट. ओके 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 ओके. और खाने पीने में कुछ परहेज से फायदा हो सकता है? सॉल्ट, हाँ, सॉल्ट लेवल कम खाना है, नॉर्मल से कम. क्योंकि आप जितना नमक खाओगे उतना आपको प्यास लगेगा, उतना बॉडी हाँ में वाटर अक्यूमुलेशन होगा. तो सॉल्ट अगर आपने कम किया तो आपको प्यास हाँ. भी कम लगेगा और बॉडी में पानी भी कम जमा होगा. अच्छा, दूसरे एक बात कि अभी सॉल्ट है ना, आयोडाइज खाना चाहिए कि अपना वो रॉक सॉल्ट खाना चाहिए? वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है. हाँ, ये अभी एक्चुअली मैंने बताया था कि आयोडाइज सॉल्ट और रॉक सॉल्ट में क्या फ़र्क होता है. नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम होता है और रॉक सॉल्ट में पोटेशियम होता है. बराबर. ओके. तो अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाँ. रॉक सॉल्ट वगैरह खा सकते हो. लेकिन अगर ओके. किसी को कुछ किडनी प्रॉब्लम है या किडनी वीक है या क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए. अच्छा, अवॉइड करना चाहिए. यस. माने जिनको स्वेलिंग वगैरह है तो. अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना चाहिए. ओके, तो आयोडाइज नमक ही लेना चाहिए, राइट? यस यस, नॉर्मल से कम. नॉर्मल से कम. थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट, यस थैंक्स अ यस लॉट. यस. नाइस. बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम. अभी एक टाइम आ गया है कि सब लोग तालियों से You can clap your hands and you can say thanks to the doctors. Thank you, doctors. You can clap your hands and you can say thanks to the doctors. Thank you, doctors. You can listen to the stethoscope and get some medicine for your throat. They've got everything that you'll ever need to get better. To get better. Oh, thank you, doctors. Thank you, doctors. You can clap your hands and you can say thanks to the nurses. Thank you, nurses. You can clap your hands and you can say thanks to the nurses. Thank you, nurses. You can listen to the stethoscope and get some medicine for your throat. They've got everything that you'll ever need to get better. To get better. Thank you, nurses. Thank you, nurses. You can listen to the stethoscope and get the medicine for your throat. They've got everything that you'll ever need to get better. To get better. Thank you, doctor. Thank you, doctors. Thank you, nurses. Thank you, nurses. Healthcare workers. Thank you, doctor. Thank you, doctors. Thank you, nurses. Thank you, nurses.